Hello, I'm Yoshita, Literature Collective Associate at Belong, and welcome to the second session of the day, Words of Peace and Protest, Adivasi Literature and Language. Adivasis have always created oral archives of their stories and histories over generations in the form of songs, folktales, and myths. Today, Adivasi literature incorporates these histories and oral traditions while commenting on modern challenges faced by the community. They address the unfair treatment of Adivasi land in the name of capitalist development, explore the evolution of the community's relationship with Jangal, Jameen, and the loss of their own language and culture. In this panel, we will discuss the themes common in Adivasi literature, question the role of language in these narratives, and explore the hierarchy, even within the diverse Adivasi communities, that determine whose voices are heard the loudest. I will pass on the virtual mic now to the moderator for this panel, Nandini Tank. Nandini Tank is a PhD scholar at NIT. Her research areas include Adivasi studies, media studies, and intersectionality. Go ahead, Nandini. Yeah, hi. Am I audible? Yes. Yes, Nandini. Hi, Yoshita. Thank you so much. We welcome speakers, Mahadev sir, Nitisha ma'am, and Dr. Tanti sir. So we'll begin. We'll begin by taking up few of the common questions, general questions, which will be an open discussion by our three speakers. And then after that, we'll take one questions for each speaker. And finally, we'll pitch in the questions sent by our audiences. So I'll just give a brief bio of all the speakers. So Mahadev sir, Mahadev Topo, was born in an Adivasi family, Uram family in Ranchi in 1954. Topo sir is a leading literator. He has written poetry, novella, short stories, and plays in Hindi and his mother tongue Kuruk. He's also tried hands at acting in the Nagpuri film Baha and two short films Pahara and Adpa Kanna in Kuruk. Jangal Pahar Ke Paat is one of his anthology of poems, which is among his notable published work. His poems have been translated in German, Assamese, Sanskrit, and Telugu. Nitisha Kalpoma is presently an assistant professor at BBMKU. She formerly taught Hindi literature at DRCDU. Her research areas are Adivasi folklores and indigenous people of Jharkhand. And Dr. Kamal Kumar Tanti is an award-winning bilingual poet, writer, academician, critic, and translator based in Assam. His first collection of poetry, Maran Guru Aman Pita, won Yuva Puraskar in 2012 and the Munir Barkataki Literary Award in 2008. His Assamese poems have been included in various anthologies and featured in various journals. So we'll just take up the general question जो आप तीनों में से कोई भी इसमें आंसर कर सकते हैं. So Johar. So the first question I'd like to ask is Adivasi literature mostly remains confined to a particular region it is produced. So आदिवासी लिटरेचर जहाँ पे हम लिखते हैं, जहाँ से जैसा अगर हम झारखंड से लिख रहे हैं तो वो कहीं तक वो सिर्फ झारखंड एरिया में ही कन्फाइन हो जाता है. So मेरा क्वेश्चन आप तीनों से ये है कि what are the barriers? क्या मुश्किलें आती है कि हम एक इंडियन लिटरेचर के जैसे स्कूल में जो इंडियन लिटरेचर पढ़ाया जाता है उस तक हमारा आदिवासी लिटरेचर जैसे असमीज में हो गया या फिर अगर हम नॉर्थ ईस्ट के जितने भी आदिवासी लिटरेचर है वो ये सब एक पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइंड है. तो आप लोग एज अ राइटर, एज अ पोएट, एज एन एकेडमिशियन कैसे व्हाट आर द बैरियर्स एंड कैसे इस इशू को हम लोग टैकल कर सकते हैं? इफ यू कुड थ्रो सम लाइट ऑन दैट. नंदिनी, आप बाय नेम किन्हीं को बोल देंगे तो शायद आंसर करना आसान होगा. ओके, है ना? महादेव सर आप कुछ बोल रहे थे.
सर अनम्यूट करना होगा। नहीं सर। हाँ हेलो। हाँ सर, अब सुन सकते। हाँ, जोहार सभी को। और इस कार्यक्रम को करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। कमल जी आ गए हैं, उनको जोहार। नितिशा जी और आप नंदिनी जी और जितने भी सारे लोग जुड़े हुए हैं सभी को जोहार। और ये बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर आपने चर्चा की है। और ये जो सबसे बड़ा सवाल है कि ये ट्राइबल लिटरेचर है वो अपने ज्योग्राफी में क्यों कन्फाइन होता है, सवाल ये है। तो कोई भी लिटरेचर है, चाहे हम अफ्रीकन लिटरेचर की बात करें या अमेरिकन लिटरेचर की बात करें, रशियन लिटरेचर, फ्रेंच लिटरेचर, या हिंदुस्तान में ही हम जब लिटरेचर की बात करते हैं तो बंगला लिटरेचर बंगाल में होता है, हाँ, मलयालम लिटरेचर केरल में कन्फाइन होता है, मराठी लिटरेचर महाराष्ट्र में। तो एक जो है वो उसकी एक लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, एक जोग्राफिकल आइडेंटिटी, कल्चरल और सोशल आइडेंटिटी होती है, वो उसी से जुड़ी होती है। इसीलिए ये स्वाभाविक है, कोई भी लिटरेचर, अब वर्ल्ड का कोई भी लिटरेचर होता है वो अपने पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल, कल्चरल और सोशल जिससे जुड़ा हुआ है, जिस समुदाय से जुड़ा है, वो उसी की बात करेगा। अब होता क्या है कि उससे जो जुड़े हुए सवाल जो हैं, जो बड़े मानवीय संदर्भ में जुड़े होते हैं, तो उसके जो अनुभव होते हैं वो उसको इंटरलिंक करते हैं दूसरे से, दूसरे के सेंटिमेंट से, दूसरे के हार्ट से, और वो तब समझता है कि हाँ भाई ये जो है एक ब्लैक लिटरेचर भी एक ट्राइबल लिटरेचर के लिए हमारे लिए कुछ है, या नॉर्थ ईस्ट में जो लिखा जा रहा है ट्राइबल के द्वारा वो झारखंड के लिए वेरी रिलेवेंट लगता है, या झारखंड का जो लिखा जा रहा है वो नॉर्थ ईस्ट के किसी रीडर के लिए लगता है कि हाँ ये मेरे लिए रेलेवेंट है। तो यही इसकी मतलब मैं समझूंगा कि कन्फाइन नहीं है, वो उसकी व्यवस्था है कि हम जिस जो जीवन जी रहे हैं और जो अनुभव कर रहे हैं, देख कर रहे हैं, उस चीजों के बारे में कहें। तो यही हमारी एक राइटर होने के नाते वही हमारी ऑनेस्टी भी है, वही हमारी ईमानदारी भी है कि हम जिस परिवेश में रह रहे हैं उसको ज्यादा गहराई से, ज्यादा बारीकी से, ज्यादा सूक्ष्मता से उससे जो जीवन दर्शन है, जो अलग अलग एक्सपीरियंस हैं, जो टेक्नोलॉजी के प्रभाव से या डेवलपमेंट के असर से या किसी तरह के चीजों से जो असर पड़ रहा है, और जो हमारे लाइफ में जो कंट्राडिक्शंस आ रहे हैं, स्ट्रगल आ रहे हैं, या जो कुछ भी घटनाएं हो रहे हैं, उसको जब हम कविता में, कहानी में, उपन्यास में, नाटक में लिखते हैं तो वही आता है। और मैं समझता हूँ कि ये कन्फाइन नहीं है, ये हमारी क्या कहेंगे, जरूरी है वो बात कहना कि हम उस चीज को जुड़ के, अपनी जमीन से जुड़ के हम अपनी बातों को कहें। हाँ मैडम, आगे और कोई बोले इसमें? शुक्रिया सर। नितिशा मैम, अगर आप कुछ बोलना या चाहें। नंदिनी, सभी को जोहार। बिल्कुल मैं महादेव सर की बातों से सहमत हूँ। कुछ बातें जो ऐड करूंगी वो बस इतना सा है कि सबसे पहले हम लोगों को इस बात को एक्नॉलेज करने की जरूरत है कि आदिवासी सोसाइटी बहुत डाइवर्स है, उसका ज्योग्राफिक रीजन बहुत डाइवर्स है, और उस अलग अलग ज्योग्राफिक रीजन में रहने की वजह से उनके अनुभव बिल्कुल उन्हीं ज्योग्राफिक कंडीशंस की वजह से उपजे हुए हैं। अगर कोई झारखंड का व्यक्ति लद्दाख के इश्यूज को नहीं समझ पा रहा है, वहां के आदिवासियों की स्थितियों को नहीं समझ पा रहा है, तो रीजन है, कारण है। ठीक है, तो मुझे लगता है जब भी हम लोग आदिवासी साहित्य में बात करेंगे कि उसकी क्या बाधाएं हैं, क्यों वो एक खास रीजन तक रह जाता है, तो सबसे पहले एक सवाल भाषा का है। मैंने बताया कि ये बहुत डाइवर्स है, होमोजेनियस नहीं है। तो एक हेट्रोजेनियस सोसाइटी से जब भी आप इंटरैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों को एक मेन स्ट्रीम की भाषा का चयन करना पड़ता है, और इसमें आदिवासी भाषाएं पीछे छूटती हैं।
आदिवासी भाषाएं सिर्फ इस वजह से नहीं पीछे छूटती है कि हमें कम्युनिकेट किसी और से करना है, लेकिन इस वजह से भी छूटती है कि पढ़ने पढ़ाने की जो जगह भारतवर्ष में शुरू हुई, वो आप देखेंगे कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम एक भाषा के साथ में आता है, एक खास तरह की मानसिक दास्ता के साथ में आता है, एक खास तरह के एक आर्यन हिस्ट्रियोग्राफी के साथ में आता है। तो वो बहुत कुछ है जो छिपाना चाहता है, जो हमसे नहीं दिखाना चाहता है। तो हमारे पास ये एक मात्र रास्ता बन जाता है कि हमें इन्हीं जो लैंग्वेज में हमने पढ़ाई की, जिसमें हमने अपने आप को गढ़ा, हमने अपने अनुभवों को समेटा, उसमें एक्सप्रेशंस आते हैं। हमसे हमारी भाषाएं छीनी गई हैं। तो एक लैंग्वेज का मेजर बैरियर है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री का बैरियर है, और प्लस एक देश में एक ईमानदारी अंदर से नहीं आती है लोगों में कि हम लोगों ने यहाँ के इंडिजिनस लोगों के साथ, मूल वासियों के साथ, आदिवासियों के साथ एक बहुत बुरा व्यवहार लंबे समय से किया है। और यही वजह है कि आज सारी चीजें बहुत सिंबलिज्म में चली गई है। वो दिख रहा होता है कि ये हमारे उत्थान की चीजें हैं, लेकिन वो हमसे जुड़ी हुई बिल्कुल नहीं होती है। तो हम लोगों को जब भी आदिवासी साहित्य की बाधाओं की बात करेंगे और उनके रीजनलिटी पे बात करेंगे, तो भाषा एक प्रमुख कारक आता है। साथ ही वो ज्योग्राफिक रीजन सारे तरीके से उभर के आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीजें जुड़ने में रोकती हैं। अगर मैं बात करूं, मैं हिंदी पढ़ाती हूँ और हिंदी से मेरा वास्ता रहा है। मूलतः कुड़ुक भाषी हूँ, लेकिन मुझे मेरे परिवार में कुड़ुक नहीं मिला, क्योंकि मेरे घर में स्पीकर वाइज एक मुंडारी मेरे पिताजी थे और स्पीकिंग में माँ जो थी उनका कुड़ुक था। तो दोनों ने आपस में बात नहीं किया, स्कूल और कॉलेज में सुविधा हो इसलिए उन्होंने हिंदी का चयन कर लिया हमारे लिए। तो हमारे पास से हमारी भाषाएं छूट गई। अब ये एक समय है जब हम लोग उसको ढूंढे और उसको सीखने की कोशिश करें। लेकिन आपको मालूम है कि जो मातृभाषाएं हैं वो प्राइमरली जब आपने बिल्कुल छोटे में सीखा हो और बाद में आपने बड़े होकर लर्न किया हो, और वो भी एटमॉस्फेयर आपको मिलना पड़ेगा, सुनना भी पड़ता है सीखने के लिए भाषाओं को। सिर्फ बोलने से, सुनने के बिना, लिखे बिना, पढ़े बिना, समझे बिना, ये सारा मतलब भाषा का एक पूरा एक मैकेनिज्म है लर्न करने का। तो इन सब चीजों से हम दूर हुए हैं, और मुझे लगता है इसको कैसे सुलझाएं, इस पर अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आदिवासी भाषाओं को रोजगार और पठन पाठन से जोड़ करके ही हम लोग इस चीज को, इश्यू को रिजॉल्व कर सकते हैं। और वाया ट्रांसलेशन सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में नहीं, लेकिन आदिवासी भाषाओं का अन्य आदिवासी भाषाओं में। और ये एक यूनिटी तभी बनेगी जब हम लोग नॉर्थ ईस्ट से दूरी ना महसूस करें, जब हम पश्चिम भारत के आदिवासियों से दूरी ना महसूस करें, एक सेंट्रल बेल्ट का जो इंडियन आदिवासी है उसमें और कश्मीर के आदिवासियों में हम दूरी ना महसूस करें, या एक संवाद की प्रक्रिया में हम आने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है इन सब में आदिवासी भाषाओं को आधार लेके उन्हीं में अनुवाद करके और उनके पठन पाठन और रोजगार से इस भाषाओं को जिंदा रखा जा सकता है। और आदिवासी साहित्य खासकर की जो अपने एक्सप्रेशन है, जिसके लिए हमें हिंदी में शब्दावलियां नहीं मिलती, अंग्रेजी में शब्दावलियां नहीं मिलती है, वो कम से कम सॉल्व हो सकता है, ऐसी मेरी समझदारी है। थैंक यू। थैंक यू मैम, वो काफी इम्पोर्टेंट था टू अंडरस्टैंड एंड ऑल। डॉक्टर तांती, अगर आप कुछ कहना चाहेंगे इस Yes, I have a few perspectives to share with you. Yes, sir. First of all, what I have observed when we talk about, if I speak English, it's all right, right? Yeah, okay. So basically, when we talk about Adivasi literature or Adivasi Sahitya, so what we basically doing with it? So firstly, we are basically writing our own stories. And basically what happens when a Adivasi writer comes in, when he starts writing, he has so much of pain, so much of feeling of loss, and so much of alienated, that the first thing an Adivasi will write something on paper, then he or she will write his or her own stories. So we have so much of stories to tell, and all these stories are related to nature. We are very much rooted.
then we are very much related to the forest, rivers, then anything you can talk about in your surroundings. So that's basically what I feel personal. That is my personal perception. Uh, in that way, when we start writing, and when we are expressing ourselves in different platforms by saying something or by writing something, the first thing what I have observed, who are our audience? Our audience is not basically, you can get much audience are from the mainstream. So when we talk about it, there is always a sense of alienation and with the mainstream societies, and that's why we cannot go to that particular belongingness with our mainstream, and we cannot come back to our own rootedness. Just like, say for example, in my case, when I started writing, just like Nitisha and Mahadev sir already mentioned, that we lost our languages, we lost our own spoken languages, we lost our own scripts. So in my case also, what happened, just like Nitisha has mentioned, that Hindi has become her medium to express anything or read anything. So similarly, in my case also, I started reading, started in Assamese. So later I have shifted to English, and we are being taught in Hindi also. Now, the point is that we are all adopted writers. We have adopted a particular language, then we start writing our own stories. Say for in my case, when I start writing in Assamese, I'm telling my own stories slowly, but that is in Assamese. So that reaction, when I'm getting the reaction from the mainstream writers or mainstream readers, it's always like that. They are very unaware of our stories. So still now this is happening, because what happens in this scenario, that sometime you will feel that mainstream audience will reject you, or mainstream audience will accept you, or they will ignore you. So in that scenario, we have that faith. If I have that faith, okay, I will tell my own stories, whatever whoever is listening or not. Then in later years, I find out that okay, there are other languages also I can jump. So then I thought of English. So I have slowly started translating my own poems, and there are some friends, so they had translated my poems. So it somehow it's very confusing for the reader when he is reading. He is reading an Assamese poem. There are a lot of Assamese influence in my poems, but I am writing about my own people, own land. I'm talking about losing my own lands. That is in Assamese, that has been translated into English, and was some reader in, say, North India or say America, then the perception is, for that reader also, it becomes very kind of what we can say, that reader will also feel that alienation from our side. So that is happening. So the first thing is that we don't have our own languages right now, although we are developing our language, that is there. But in that scenario, for a writer like us, we always to be accepted from various readers, various kinds of readers from different locations. So in that scenario, what happens, we move to a particular domain. Okay, we should be exposed to more readers so that we can tell our more stories. So in that scenario, it is always confusing for us. I'm talking about a real perspective. I'm talking about my own perspective, that when I start writing, what should I write? I will write my own stories, Adivasi stories in Assamese, that will be translated in English or Hindi. Then some reader will read. Because it happens that we are very linguistically, we are small communities. So it is our kind of we have to take that path. Somehow some writers are quite lucky enough that they have adopted a larger linguistically larger language like English, and they have get that recognition. So in that scenario, it happens to us that then somehow I feel it's always a contradiction for me. Would I write in Assamese, or would I write in Sadri or English? So that's how
I feel that Adivasi literature has a lot to do now, has a lot of challenges for us. And at the same time, my perception of Adivasi literature is about the stories, rooted stories. But the most important part here, whatever language we are writing, but we are rooted, we are original, we are honest. So that we can tell you that is there. So that is one perspective that writers from Adivasi communities normally write about the truth. So that's where actually people take interest, the readers take interest, and specifically we are being specified that he is a Adivasi writer and he's writing about this. But at the same time, as a writer, I am a part of a heterogeneous society. I am living in a town where you can find few Adivasis. There are different communities. There are Karbis, there are Boros, there are mainstream Assamese, there are caste Hindu Assamese. So as a writer, I also feel that I should write about them as well. So when we start writing a poem is a kind of feelings, but when we start writing a novel or a story or a non-fiction, then that our response is also being recorded. Where when we respond to a person from Bodo community or when we respond to other people, so that response is also coming to us. So it is a very complex domain for us that although we are writing about our own communities, but that those stories are related to other communities also. So they are all these community writers from other languages also have the same feeling. So, but slowly, the scenario is changing. And this is happening because of two languages right now, English and Hindi, because a lot of people are taking interest in Adivasi literature and they are translating those. So that's how and response. But at the same time, what I have seen personally some of our writers that slowly when they are getting responses from the larger audience, they become less rooted, they become less honest. So this is also happening with the writers. I don't want to name any of them from different locations. So even for tribal writers also this is happening for basically from Assam. So that's how the whole journey has to be recorded for a Adivasi writer, that how he started, and it will change over the time period, over the location. So that's how I find it very we are in a uh, complex network of thought process, complex ideas. So I personally feel that now we have the challenge to be more rooted than ever. What the situation in the country is right now, we have to raise the voice for our people also by writing. We have to talk about the larger society also, heterogeneous society also, and at the same time we have to be original as well. So that's how I think that Adivasi literature has a lot to do now. A lot of challenges are there, and definitely I can see a lot of younger generation, lot of younger people are coming up and they are writing more original stories, more rooted stories. So I believe that in over course of time, definitely Adivasi literature will evolve its own paths, and it will definitely cross barriers, cross geolocations, cross language barrier, and it will definitely reach somewhere. I don't know now where, but Adivasi literature has a kind of a very good future in my perspective. Yeah, that's all. Thank you, sir. That was quite enlightening. And I would take that discussion further. And my next question would be like, since language in Adivasi literature is quite important, you as a writer and poet, do you, when you start writing a work, do you have a particular audience in your mind? Are you writing as an Adivasi, as an individual, or do you write as a community? Do you do you write as representing a community, or do you just uh, uh, that can also be like a mixture of that? So like to ask महादेव सर, आपकी कविता मैंने पढ़ी है जंगल पहाड़ के पाठ, और उसमें आपने काफी कविता में लिखा है कि अपने मातृभाषा में लिखो,
क्योंकि वही है जो आपको हमें वापस हिस्ट्री वापस हम अगर लिखना चाहते हैं, अगर हम वापस मेन स्ट्रीम से अगर फाइट करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, तो हमें अपनी मातृभाषा में लिखना पड़ेगा। सो आप जब लिखते हैं तो आपकी काफी सारी कविता, तो आप अपने लिखने से पहले ऑडियंस आप सोच के रखते हैं, अगर हमें आप बताएं तो, कि आप सिर्फ आदिवासियों को लिख रहे हैं एज अ लाइक काइंड ऑफ प्रोटेस्ट? देखिए नंदिनी जी, जब मैंने लिखना शुरू किया था तो जो शुरुआती जो लेखन शुरू किया वो मैं अपनी मातृभाषा में ही लिखा, कुड़ुख में। लेकिन वो अपने एक तो शायद टीनेज में था, मतलब जिस समय हाई स्कूल वगैरह में था उसमें लिखा, और उसमें जो भी मैंने देखा कि मैं कहीं छप नहीं सकता, छपने के लिए कहीं पर कोई स्थान नहीं है। तो इस चीज ने मुझे, और उसके बाद फिर हिंदी भी पढ़ रहा था तो फिर मुझे लगा कि मुझे हिंदी भी लिखना चाहिए। तो फिर मैंने हिंदी में भी लिखना शुरू किया, और कॉलेज में मुझे हिंदी के लिए एक कंपटीशन में मुझे ऐसे राइटिंग के लिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया। तो इस चीज ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं ज्यादा है लग सकता है कि मैं हिंदी में लिखूं, और इसलिए फिर मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया। क्योंकि हम लोग घर में कुड़ुख बोलते थे, गाना गाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन क्या है कि जो बातें मैं पहुंचाना चाह रहा था कविताओं में, वो छपने का स्कोप नहीं था। तो छपने का स्कोप मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं हिंदी में लिखना शुरू किया, और कॉलेज की मैगजीन में मेरी कविता छपी। उसके बाद में कॉलेज छूटने के बाद 7-8 साल बाद मेन स्ट्रीम की मैगजीन में कविता छपी। लेकिन उसका फिर गैप रहा 8-10 साल। 8-10 साल मैंने सोचा कि मुझे क्या लिखना चाहिए, क्यों लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, किसके लिए लिखना चाहिए, ये सारा कुछ मैंने सोचा, और उसके बाद में मैंने हिंदी में लिखा। लेकिन क्या हुआ कि हिंदी में लिखने के बावजूद आप देखेंगे इसमें बहुत सारे जो ट्राइबल इन्वायरमेंट के या ट्राइबल वर्ड हैं या जंगल के जो दृश्य हैं, वो सारा कुछ है कि वो इस कविताओं में मौजूद है। तो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि मैं अपने जीवन को ज्यादा लोगों तक बचाने के लिए, क्योंकि उसमें क्या हुआ, हमारे लोग भी अपनी मातृभाषा बोल रहे थे, तो अपनी बातों या तकलीफों को या जो सेंटिमेंट्स या विचार को पहुंचाने के लिए फिर मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया। लेकिन बीच बीच में अपनी मातृभाषा कुड़ुख में भी लिखा। तो इसमें जो संग्रह में है 44 कविताएं हैं, तो 44 कविताएं में से 2 कविताएं मूल रूप में हिंदी में लिखी गई हैं। उसमें लिखा हुआ है कि मूल रूप में हिंदी में लिखे गए हैं। तो मैंने दोनों में लिखना चालू रखा, और अभी मैं नाटक लिख रहा हूँ, तो नाटक में जीवन भर मैं कुड़ुख में ही लिखूंगा। बाकी चीज मैंने फैसला किया कि बाकी चीज मैं हिंदी में लिखूंगा, लेकिन मैं नाटक जो लिखूंगा, अभी तक मैंने 2 एकांकी लिखे हैं, तो हालांकि उसका मंचन नहीं हो पाया है कोविड वगैरह के चलते। तो मैं नाटक कुड़ुख में ही लिखूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी बातें या कुछ चीजें हैं या कुड़ुख समाज की जो बातें हैं, मैं अपने लार्जर लोगों तक पहुंचाने के लिए नाटक एक अच्छा माध्यम है, और नाटक हमारे समाज में नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने भी ये फैसला किया, और मैं अभी दोनों भाषा में लिख रहा हूँ। उसमें लिखने में ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो सोच रहे हैं, मेरी जो स्ट्रगल है या मेरी जो तकलीफें हैं, मेरा जो गुस्सा है, आक्रोश है, या जो भी प्रेशर है मैं झेल रहा हूँ, उसको झेलते हुए कैसे हमारे कलीग्स को या हमारे जो ऑडियंस हैं या हमारे रीडर हैं, जो भी हैं, उनको हम कैसे बताएं। मुझे खुशी है कि ये जो कविता संग्रह है, ये संताली में भी ट्रांसलेट हुई है, ये किताब संताली में भी, अंग्रेजी में भी और मराठी में। और ये बहुत आश्चर्य की बात, आपको सुन के अच्छा लगेगा कि ये तमिल में भी ट्रांसलेट हो रही है। तो मैं नहीं जानता हूँ कि ये जो जंगल पहाड़ के पार्ट, लेसन्स फ्रॉम फॉरेस्ट एंड माउंटेन, कैसे लोगों को
जोड़ सका और इतने लैंग्वेज में जा रहा है। तो शायद महाराष्ट्र के लोग हैं या केरल के लोग हैं या साउथ के जो हमारे तमिल भाई हैं, वो भी कहीं से हमारी जो तकलीफें हैं या सेंटिमेंट है उस पे कहीं ना कहीं वो जरूर अपनी इमेज या अपना अपनी बातों को उसमें जरूर देखते पाते होंगे, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, इसीलिए वो हमारी बातों को समझ रहे हैं। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि हमें तो मैं तो अगर लिखना, कोई भी ट्राइबल राइटर होगा उसको सभी से मैं कहूंगा कि भाई आप तो अपनी मदर टंग में ही लिखो। लेकिन क्या है कि मदर टंग में लिखने से हम जो दूसरे ट्राइबल के कम्युनिटी से मैं नहीं जुड़ पाऊंगा। जैसे भी कमल जी हैं, तो चलिए उन्होंने अंग्रेजी में लिखा, ठीक है, उनकी कविता संग्रह है जो मैंने असम में गुवाहाटी में ही देखा था, असमिया में। तो असमिया में मैं जानता था तो पढ़ लिया था, देख लिया था उनके 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 किताब को। लेकिन अंग्रेजी, हिंदी या बांग्ला, उड़िया में भी हमारे सारे लोग लिख रहे हैं, मराठी है और दूसरी बहुत सारी भाषाओं में लिख रहे हैं। वो सभी लिखना चाहिए और साथ ही साथ क्या चाहिए कि ट्रांसलेशन होना चाहिए। बीच बीच में अलग अलग कलेक्शंस हैं, अलग अलग राइटर के 4-5 15 20 25 30 लोगों के, ऐसे लोगों के सारे का एक जो संग्रह है वो बहुत सारे छपे हैं। वो और ज्यादा छपना चाहिए। प्लस क्या है कि अंग्रेजी में भी छपे, तो अंग्रेजी में क्या है कि पूरे हिंदुस्तान के हम ग्रेटर ऑडियंस से भी जाते हैं। हिंदी में छपने से बाद हिंदी का जो बड़ा ऑडियंस है उसके बीच भी जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं हिंदी में लिखने के कारण, हालांकि मैं 1981 से लिख रहा हूँ, लेकिन 81 में लिखने के बाद फिर मैं 7-8 साल गैप छोड़ा। मैं बोला क्यों लिखना, जैसे कि मैं बताया क्यों लिखना चाहिए, इस पर सोचा और उसके बाद मैं फिर लिखना शुरू किया और हिंदी में लिखा। तो धीरे धीरे लोग, तो शुरुआत में तो ये आदिवासी क्या है ये समझते नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे मुद्दों को लोग धीरे धीरे समझने लगे और जैसा कि आजकल जो हमारे कविता के जो भोज है वो सिर्फ जल जंगल जमीन से आगे की भी बात कहती है और मैं आगे उस बातों से जुड़ूंगा। तो इसीलिए अभी पूरे हिंदुस्तान में आदिवासी लाइफ स्टाइल या उनका जो जीवन दर्शन है वो उसको वर्ल्ड लेवल पर लोग उसको बहुत ही प्रासंगिक पा रहे हैं। इसीलिए ट्राइबल लिटरेचर की अहमियत या ट्राइबल जीवन को समझने की जो है वो एक इच्छा दूसरे समाज के लोगों में बढ़ गई है। तो ये एक अच्छा साइन है ट्राइबल लोगों के लिए, ट्राइबल लिटरेचर के लिए, कि उनके ऑडियंसेस अब बढ़ रहे हैं। तो आगे और बात किया जाए, है ना। थैंक यू महादेव सर। आपकी कविताएं सच में काफी इंस्पायर भी करती है और कहीं कहीं क्वेश्चन भी करती है कि हमारे साथ जो हुआ है, जो हो भी रहा है, उसको काफी मतलब हम कैसे लड़े उस चीज से। तो आई थिंक सिर्फ हमारा नहीं, समाज बाकी के दूसरे क्षेत्रों से भी, दूसरे ट्राइबल कम्युनिटीज भी इसलिए आई थिंक रिलेट कर सकते हैं क्योंकि वो स्ट्रगल कहीं ना कहीं सेम रहा है लोगों में भी, कम्युनिटीज में भी। तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी कविता दूसरे भाषा में ट्रांसलेट हो रही है उसके लिए, और आपके प्लेस के लिए भी काफी काफी बधाई आपको। डॉक्टर Kanti, अगर आप if you could share, like when you write, do you have any particular audience in mind? Do you write only for your own tribal community, or is it like for the larger audience? So before you write or when you write, do you keep a particular audience in your mind? If you could like share that. Here I just would like to tell you a very simple thing. When a writer writes, so basically he writes for his own. As a writer, when I have the feelings in my mind, I have a lot of things to tell you,
And in that scenario, what I did, I express myself, what my response to various things happening around, or maybe anything. So in that scenario, so firstly, when I start writing, I can see people that I was very shy guy when in school and in college also. So I cannot speak much. I cannot be a part of larger friend circle. So I have lot of expressions to share with people. So I started writing. I wrote, okay, I have my pen, so I can tell what I am thinking, I can tell to lot of people. Then all these are in a rough form. Then when I send to newspapers or magazines, so slowly it gets started publishing when I was a college student. Then people have reacted, okay, you are writing this very good, that I liked your writing. So those responses slowly motivated me, okay, that it's not only about writing for myself, I have to write for other people as well. So that sense of gratitude is also there, and at the same time, you have an urge to write more, not only about your own feelings but about the society. So when I come out of my own room, I see whatever I see, that society. So whatever is happening in the society, I have to tell about that also. I have responses for that also, feedbacks for that also. Then slowly, what happened? Okay, some of the means different stories I have started writing. I have started non-fiction also. So that's how you cannot be personal all the time. So you have to be part of the society. So you'll definitely write about the society. And then what happened after that? There are a lot of things to tell. So I need perspective. You cannot write and go on and on. So all the writers have some particular ideological faith or something. Somehow we relate with something. So it happened that I slowly engrossed into more uh, kind of ideological stand. So if you do not stand somewhere, you cannot see the society in a better way, and you cannot write. So that's how I come into, I stand for a ideological position. Then I can see a lot of things are happening. I can see how people are reacting in the society, how people are getting uh, say people, lot of things are there in the society is happening. So then I slowly it comes to my mind that okay, I have to write about them, but those things should reach somewhere else also. That I'm writing a poem about my own community, that means I have the urge to tell about myself to other people. So those other people are my audience, along with my own people. So when I'm writing about my own people, means I'm in community. So when I talk about my community, I have that feeling that okay, whatever I have written, that should know by other people. We should say something is going on in the tea gardens, that I should write about them, and these things should be exposed. So that kind of thing happened with me, and it happened with lot of people, lot of writers. It happened. So you cannot deny the social response, no? So that's how it happened to that. I somehow then slowly I see I have that urge. Personally, I'm telling all these things. So I need a larger audience to tell about my stories, to tell about my ideas, to talk about my from my own ideological proposition. So that's where I was always looking for a larger audience when I have evolved slowly as a writer or as a poet. So that's how I came into scenario that okay, that when I have left Assam for higher studies, I happened to be in Bombay and Pune. Then around that time, lot of people, okay, they're asking me that okay, you write in Assamese, you write in your own language. So, but how will respond to your writing? How will I read?
So then that the other option for a writer, translation, has come up to my mind. And I was very lucky that some of my friends, all are from Assam around that time, they have started translating my poems to English. And some people, some good translator, Guwahati-based translator are there. They have started translating in Hindi. Then in that scenario, okay, I'm getting a larger audience. I can speak to a lot of people through my writing. But at the same time, translation has also its own barriers. Translation is also having some issues actually. That means, say for example, a particular word in word we talk in home. Say for example, uh, when we say churi, I'm telling in a Hindi word. Say churi, वो लड़के ने चूड़ी पहनी थी. Now, when we talk about bangles, that how we speak that na churi, how we feel about it. When we talk about bangles, it's sometimes that sense of emotional touch is lost. Say if I'm writing about my mother's bangles, so when I talk about meri maa ki churi, when I speak this, because I know Hindi also, or mur mar suri, mur mar kharu. When I talk about this, and when it is translated, I somehow feel that that sense is not being translated, that all those things cannot be translated. So then I decided, okay, I have to take a different strategy. I will continuously write in Assamese, and I will start writing in English in a different way. I will take different perspective for that. And also the task of translation should go on. So I am very lucky that I have a lot of friends who are very good in Hindi or English, and they know my mother tongue, Assamese. So this whole process is happening, and it happens with every writer in Assam also. I have seen a lot of people. They are coming from different ethnological background. They are coming from different tribal communities. For them also, it is happening the same way. When they are writing that from the perspective of their own tribal world, they're writing in Assamese, but that is being translated in English or Hindi. So the evolution of the writer is an inevitable in that scenario. So that's how I feel that every writer, I don't know, some writers are very personal, they write it and they keep it their own diaries. I'm not talking about them, but because I belong to a community, I have to talk about my community. I will definitely looking for a larger audience. If something is happening in tea gardens in Assam, that I have that urge, I have that feeling that this thing should go to a larger audience. This kind of incidents or this kind of whatever is happening, those things should go to a larger audience. So definitely as a writer, I'll be looking for a larger audience and quality audience also. And sometimes what happens, if you are writing in a regional language, the response is quite very much interesting. Even people, when I publish writing in some magazine or in some newspaper, if I give the phone number, the whole day or for 2 days, I used to get calls that they give the response. But when I write in English, the similar response I may not get also, because still the regional readers are a larger chunk of readers in India. So that's where also, because when I talked to my friend Kaushik Borua, he is directly writing in English, he's my classmate. So he used to tell me that in Assamese only, we talk in Assamese. So he used to tell me that when you publish a poem or when you publish an article, you get so much call. But for us, it's kind of a, because he is asking me, am I becoming more ruthless because I'm directly writing in English? So that's where also there are a lot of pros and cons are there. Writing in regional language, writing in English or Hindi, there are a lot of pros and cons. But still, I feel that the Assamese poems, whatever I have write, they are more dear to me than English or Hindi translation. It happened for a writer. So that's where I stand for it. That for a writer like us, for an Adivasi writer like us,
And since I carry a dual identity as an Assamese also, as an Adivasi also, so I have that urge to be reaching to a larger audience. Thank you. थैंक यू सो मच सर. सो जैसे हमने बात किया लार्जर ऑडियंस को रीच करने का, आई हैव सीन कि काफी बार ऐसा हुआ कि हम एकेडमिशियंस, राइटर्स, पोएट्स, हम लोग काफी ट्राई करते हैं जो स्टीरियोटाइप या प्रेजुडिस आदिवासियों के प्रति, जैसे हम काफी कोशिश करते हैं वो खत्म हो, बट अभी तक काफी बार ऐसा होता है कि जब हम जैसे स्पेशली जब मेट्रो सिटीज में जाते हैं या यूनिवर्सिटीज में जाते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर्स जॉब में जाते हैं, काफी बार ऐसा होता है कि आपको देख के वो लोग कहेंगे कि आप इंग्लिश बोल रहे हो, आप आदिवासी कैसे हो सकते हो, मतलब आप तो दिखते नहीं हो आदिवासी. सो कहीं ना कहीं दो चीजें, एक आई थिंक कि आदिवासी लिटरेचर, मिथोलॉजी, काफी बार ऐसा हो गया है कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में हुआ है कि हम आदिवासियों का खुद का क्रिएशन मिथोलॉजी है, लाइक क्रिएशन स्टोरीज है, जो कि अलग है हिंदू मिथोलॉजी, क्रिश्चियन मिथोलॉजी से. तो वो कहीं ना कहीं हम आदिवासी जो यूथ है या फिर बच्चे हैं वो भी नहीं जानते हैं. तो कहीं ना कहीं ये एक्चुअली दो चीजें हैं, जैसे स्कूल करिकुलम में आदिवासी लिटरेचर, हिस्ट्री और ये सब नहीं पढ़ाया जाता है. और दूसरी जो है वो है मीडिया रिप्रेजेंटेशन. तो कहीं ना कहीं अभी तक मीडिया में सिर्फ यही दिखाते हैं कि आदिवासियों के साथ स्ट्रगल होते हैं, ये होते हैं, बट आदिवासी जो लाइफस्टाइल है, जो लोग है, जो अगर सक्सेसफुल है, जो मतलब कहीं ना कहीं वो मीडिया रिप्रेजेंटेशन गलत तरीके से हो रहा है या पूरी तरह से नहीं हो रहा है. तो अगर नितिशा मैम आप इस पे कुछ अपनी राय देना चाहे तो. नंदनी, मैं आपसे ये बात करना चाहूंगी कि जब हम लोग बात कर रहे हैं कि स्कूल और यूनिवर्सिटी के करिकुलम में आदिवासी लिटरेचर एब्सेंट है, हमारे क्रिएशन स्टोरीज गायब है, हिस्ट्री गायब है, तो मैंने अपनी पहली बात में भी ये बात को दोहराया है कि मनसाएं ठीक नहीं है. एक इच्छा शक्ति की कमी है कि हमें कुछ अपने बारे में सिर्फ बातें करनी है और कुछ कम्युनिटीज को उनके इतिहास से कोसों दूर रखना है. एक पूरा परिवेश बनता है तब हम लोग जाकर के आदिवासियों के बारे में कुछ बहुत बातें करना शुरू करते हैं. और अभी अगर स्कूल्स के सिलेबस तो बहुत पुअर कंडीशन में है, लेकिन यूनिवर्सिटीज में थोड़ा सा एक सबाल्टर्न हिस्ट्री का दबाव है और मतलब एक एटमॉस्फेयर बनता है कि जहाँ पे आप चीजों को इंक्लूड कराए. अब मैं आपको बताती हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के 3rd ईयर के स्टूडेंट्स को हम लोगों ने आदिवासी साहित्य विमर्श करके अस्मिता मूलक विमर्श पे एक पेपर पढ़ाया था, जिसमें आदिवासी विमर्श पढ़ाना था हमें. अब मैं उस आदिवासी विमर्श को जब पढ़ा रही हूँ तो मैंने सबसे पहले बच्चों के सामने एक शब्द कॉइन किया कि आदिवासी, लिख दिया ब्लैक बोर्ड में और बोला कि सबसे पहला इमेजेस जो आपने सोचा, जो दिखाई दिया, उसके बारे में बात करते हैं पहले. तो सबसे पहले एक बच्ची ने बोला मैम नक्सली. दूसरे बच्चे ने बोला मैम जो लोग कच्चा मांस खाते हैं, कपड़े कम पहनते हैं, जिनकी भाषाएं बहुत अजीब होती है, जो झिंगा लाला हु जैसा साउंड करता है. ठीक है, तो ये 3rd ईयर का 2021 का रिप्रेजेंटेशन बच्चे आज भी देते रहते हैं. तो ये उन्होंने कहाँ से सीखा? ये मीडिया है, ये एकेडमिया है, जिन्होंने, ये पौराणिक ग्रंथ है जिन्होंने हमारे बारे में ऐसा कुछ लिखा है, और यही बार बार इतना हाईली पॉपुलराइज किया जाता है, चाहे वो महाकाव्यों के माध्यम से हो, महाभारत और रामायण का हिस्सा हो. तो वहां पर जब ये महाकाव्यों को दूरदर्शन पोर्ट्रे करता है तो उसमें उनको इसी तरीके से दिखाया जाता है. बॉलीवुड के बहुत सारे सिनेमाज आपको इसी तरीके से दिखा रहे होते हैं. तो ये सबसे पहला मतलब एक मिथ तोड़ने का था कि मैंने बोला कि आपको जो पढ़ा रही है वो भी एक आदिवासी है, देख लो कैसे होते हैं. तो मैम आप तो अच्छे हो, नक्सली तो बिल्कुल नहीं हो, आपने कपड़े भी कम नहीं पहने हैं, आपकी भाषा भी हमें समझ में आती है. तो उनके टर्म्स और कंडीशंस में वो हमें देखना चाहते हैं. और ये खेल बहुत हद तक सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजी और इतिहासकारों ने हमारी ये छवियां बनाई है, गढ़ी है, और आज भी वो चीजें टूटती हुई नहीं दिखाई पड़ती है. ये बात हो गई बिल्कुल पहली क्लास की जो मैंने पढ़ाना शुरू किया. अब सिलेबस में क्या लगा हुआ है? सिलेबस में
राजस्थान के बहुत प्रबुद्ध और बहुत अच्छे साहित्यकार हैं हरिराम मीना सर, मैं उनको बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ। उनका उपन्यास धूनी तपे तीर लगा हुआ है, लेकिन धूनी तपे तीर का एक हिस्सा जो लगाया गया है, कुछ हिस्से मतलब कुछ पेजेस काउंट करके डाले गए हैं और पूरा नॉवल नहीं डाला गया है। तो उस पूरे नॉवल के पन्नों में क्या बधा हुआ है कि जो नायक है उस पूरे नाटक उस पूरे उपन्यास का, वो एक आदिवासी कैरेक्टर है जो बहुत संवेदनशील है, और उसको भगवान जैसे कोई एक संत साधु आके एक चमत्कार रूप में एक बीज सा कुछ शब्द देते हैं और बोलते हैं कि तुमको अपने लोगों के लिए काम करना है। तो एक नायक को उस रूप में दिखाना कि तुम्हारा उद्धारक या उद्धार करने वाला हमेशा फिर से कोई एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी या हिंदू फोल्ड से आने वाला व्यक्ति ही होगा, ये हिस्सा लगा हुआ है। और इस हिस्से को पढ़ने के बाद कहीं से आपकी आदिवासी विमर्श को लेके जो समझदारी हो सकती है, उसका जो दर्शन हो सकता है, उसकी जो चीजें जो बातें कंटेंट वाइज हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो हिस्से नहीं है एकेडमिया में। तो इसी सब वजहों से जीएस घूरे जैसे लोग इस बात को स्टैब्लिश करते बैठते हैं। 1920s का दौर है और उस समय वो कहते हैं कि आदिवासी कोई और नहीं, हिंदू, अति हिंदू है, अति हिंदू, पिछड़ा हुआ हिंदू है और कुछ नहीं है। तो ये बातें उसी लाइन पे आरएसएस काम कर रहा है, उसी लाइन पे बीजेपी काम कर रहा है, उसी पे वनवासी कल्याण आश्रम काम कर रहा है। तो हम लोगों को विचार करना पड़ेगा कि इन संस्थाओं के और इन संस्थाओं को होल्ड करने वाले लोगों की मनसाएं क्या है, सब खेल इंटेंशन का है और ये बहुत बैडली है। और यही वजह है कि मीडिया में भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो एकदम से होल्ड कर रखा है। मैं आपको कल की बात बताती हूँ, परसों 2-3 दिन पहले इंडिया टुडे ग्रुप का एक चैनल है लल्लन टॉप, वो इंटरव्यू के लिए आया कि आदिवासी महिलाओं को आखिर क्या समस्याएं होती है जब वो दिल्ली आती है। कंसर्न था द्रौपदी मुर्मू का इलेक्शन। तो चलिए, एक शीर्ष पद में हमारी महिला आई हैं, बहुत सम्मान की बात है, हम उनको रेस्पेक्ट करते हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं। लेकिन जब बात की गई कि वो अपने आप को पहली आदिवासी राष्ट्रपति कहलाना चाहेंगी या पहली वनवासी राष्ट्रपति कहलाना चाहेंगी, तो उस हिस्से को लल्लन टॉप ने तुरंत से काट लिया। इंटेंशन क्या है कि मैंने उनकी पॉलिटिक्स कह दी। जब तक नहीं कहो तब तक वो सबसे बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब आप आदिवासियों को आदिवासी टर्म के साथ एकेडमिया नहीं बर्दाश्त करता है, संविधान नहीं एक्सेप्ट करता है, लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर एक शीर्षस्थ पद में बैठा करके सिर्फ ट्राइबल प्रेसिडेंट, आदिवासी प्रेसिडेंट, ये सब टर्म्स के साथ में क्यों खेल करते रहे हैं। गांधी जी ने भी गिरिजन कहा, उनको भी इस बात से ऑब्जेक्शन था कि नहीं, आदिवासी तो नहीं है। तो इस टर्म के साथ हम लोगों को बहुत पोलाइटली, बहुत रिसर्च के साथ, बहुत पकड़ के चलने की जरूरत है। अगर नॉर्थ ईस्ट बोलता है नहीं नहीं आदिवासी तो वो झारखंडी लोग हैं जो आके सेटल हुए हैं, वही केवल अपने आप को आदिवासी कहे, वी आर ट्राइबल पीपल। तो एक शब्द के प्रति सम्मान और सहमति का भी बनना बहुत आवश्यक मुझे महसूस होता है, ये मेरी समझदारी है। थैंक यू। थैंक यू मैम, वो काफी इम्पोर्टेंट था इस इशू के ऊपर बात करने का। महादेव सर, अगर आप कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे अभी तक हमारे लिए स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडिस है ही लोगों के प्रति। सर आपको अनम्यूट करना होगा। आ रही आवाज? जी तो अब इसमें क्या होगा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया या मेन स्ट्रीम लोगों ने, मुख्य धारा के लोगों ने हमारी जो इमेज बनाई है, वो उसको तोड़ने के लिए क्या करना होगा कि हमें अपनी बेहतर इमेज बनानी पड़ेगी। और वो बेहतर इमेज आएगी, हम ज्यादा से ज्यादा लिटरेचर लिखें, अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा लिखें, अवार्ड विन करें। अगर अवार्ड मिले हैं तो अवार्ड मिलेंगे। अगर मान लीजिए कल को किसी ट्राइबल को ज्ञानपीठ मिल जाता है या नोबेल पुरस्कार मिल जाता है, तो उसकी आइडेंटिटी, उसकी वैल्यू सोसाइटी आगे बढ़ेगी। इसी तरह मान लीजिए हमारी कोई फिल्म मेकर है, हमारा ट्राइबल फिल्म मेकर है, कोई पेंटर है, कलाकार है,
या एथलीट हैं हमारे, वो खेल जगत में या फैशन जगत में या कहीं भी अगर वो एक बेहतर काम कर रहे हैं, या मेडिसिन के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मैंने किसी भी फील्ड में हमारे जो ट्राइबल लोग हैं उनको बेहतर से बेहतर काम करके दिखाना होगा। और सिर्फ एक राइटर की ही ये जिम्मेवारी नहीं है, सोसाइटी में जितने लोग भी हैं, चाहे वो आईएएस ऑफिसर से लेके कोई भी हो, कलाकार हो, पेंटर हो, मूर्तिकार हो, सभी के एक खिलाड़ी हो, सभी की जिम्मेवारी होगी कि हम मतलब सबसे बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। तो क्या होगा कि हमारे हमारे लोग हमें जानेंगे। जैसे बढ़ा हुआ समाज आज कैसे, बंगाली समाज क्यों बेहतर जाना जाता है? क्योंकि वहां नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ जी हैं, है ना, महाश्वेता देवी हैं, मैग्सेसे अवार्ड विनर हैं, वहां पर सत्यजीत रे हैं, है ना। तो उसी तरह अगर उड़िया समाज की बात करें या फिर असमिया समाज की बात करें, तो आप देखेंगे हर अलग अलग समाज में, या इवन आज केन्या की बात करें तो वहाँ नुगोगे वाथुंगो हैं या चिनुआ एचेबे हैं। तो उस केन्या जैसे छोटे से लैंग्वेज में भाला उनकी बात की जा रही है, क्योंकि उसने अपने काम से श्रेष्ठतम काम किया। तो हम जो भी ट्राइबल हैं, हम चाहे कलम से काम कर रहे हो, कूची से काम कर रहे हो, मतलब पेंटिंग का काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो हमें सबसे श्रेष्ठतम देने का प्रयास करना होगा। और ये जो है ना सामूहिक संघर्ष है, अपनी इमेज को या अपनी सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए ये सामूहिक प्रयास है। और उसमें ठीक है, हम लिखने वाले लोग लिख रहे हैं, लेकिन इस काम में पूरे सोसाइटी का, जैसे आज हमारे ट्राइबल सोसाइटी के झारखंड में कई खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक खिलाड़ी हो गए, लड़कियां खेल रही हैं, अभी फुटबॉल भी खेल रही हैं, या अभी एक लड़की यहाँ से गई है जो कि वर्ल्ड गेम रिप्रेजेंट करेगी, है ना। तो ऐसे बहुत सारे जो प्रतिभाएं हैं, अलग अलग फील्ड की प्रतिभाएं हैं, उनको आना होगा और अपने ट्रेडिशन को भी जानना होगा। अभी जैसे ये एक मैगजीन है, इसमें मेरी एक कविता अभी जस्ट आई है ये अभी, तो उसमें धुमकुड़िया में फिर दिया जला रहे हैं। ये धुमकुड़िया क्या है, हमारी पुरानी सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम था, ठीक है। वो एजुकेशन क्या था कि जिंदगी में जीने के हर तौर तरीके जो है सारा कुछ सिखाया जाता था इसी स्कूल में, लेकिन इसके बारे में आज हम भूल चुके हैं। तो उसी को याद दिलाने के लिए मैंने एक लंबी कविता ये लिखी, और मैं थैंकफुल हूँ हमारे बनास जन पत्रिका, क्योंकि इन लोगों ने इसको छापा। तो और उसके बाद में मेरी जंगल पहाड़ के पाठ जो है उसके बारे में भी ये रिव्यू 6 साल छपने के 6-7 साल बाद कहीं पर ये अच्छी तरह से छपी है। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, जैसे जैसे लोग समझते हैं चीजों को, उसके बारे में लिखते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। क्योंकि आज की तारीख में अगर देखें तो क्या है, मैं एक वर्ड बोलता हूँ कि सभी जगह लोग सवाल पैदा करते हैं। एक सवाल मुझसे बार बार पूछा जाता है कि आदिवासी विकास विरोधी क्यों है, तो मैं बोलता हूँ So I would ask Dr. Tanti. Yeah. So you mainly write about the workers of tea plantation and migration, and also on the issues of post-colonialism and all. So I would ask, when you write about identity crisis of the tea workers, so how would they identify the people for whom you write, or the community? How do they identify their history? Matlab, whatever history it's written by outsiders, so how do they go back to their identity? How do they find their identity in an alien land? And when they look the past and the written documents or the oral narratives, how do they connect with their identity crisis? How do they deal with it? Also in your work, and also the community per se. Yeah. So basically,
that your question, a set of questions basically. So that can be answered if I just give a glimpse of the historical perspectives of what had happened to this migrated people. I firstly I call it, it's a forced migration and due to a colonial conspiracy. It started like this, that one tea leaves have been discovered in the Upper Assam side near Arunachal. Then it was decided that the British planters have been called up and they are asked to do the plantation. So in that scenario, it happened to be, there is a debate also. So why this migration happened? Because they could have taken up the local people also for their plantation works. But around that time, the population is very low in Assam, and due to different political political scenarios. So around that time, it was decided, and it happened not only in Assam, it happened worldwide actually, because of they need cheap labor. The colonial rulers need cheap labor. So people from Chotnagpur have been forced migrated to Assam also at the same time, Maldives also, or West Indies also. So when these people have reached this alien land and they started working in the plantation, and then it happened to be that it's not only one community, it's becoming a very complex heterogeneous society later on in within the small tea garden area. So it's been kind of, you can say that those people were brought here and put in that area. They are landlocked, they cannot move to other places. So they started communicating with the people who are coming from, say somebody is coming from say Orissa and somebody is coming from Jharkhand, present day Jharkhand. So they have started that interaction. They have started that they started knowing about each other. Say all have their own roots, own lands, own rivers. So they started talking about it. So slowly, what happened? They, after say 56 years or 100 years, they started communicating with the other tribal people also around that area, and they started talking to the mainstream Assamese people as well. So that level of interaction being when it happens, so slowly that sense of identity grows. So in that, in for them also, it started. And because during that colonial period there are a lot of turmoils going on in around those areas. So I'm not going into point out those things right now. So when they started interacting with the other people, they are being asked, who are you? The basic question is, who are you? Why you have reached here? So they started expressing these things in Zumur songs, because there is no other options, or there is no written document by them. So basically, they started expressing, the laborers started expressing their voices in terms of songs, in terms of kahani, in terms of stories. So all these are oral. So then they started explaining things that, okay, we have uh, coming from this far land and we reached here. So both lands are our own lands. We cannot forget our forefathers' land as well. So slowly, within 200 years of time, a kind of new sense of identity has been grown. And although we support the term Adivasi till actually personally, but because of tea plantation laborers, so British colonial rulers, they have identified them tea plantation workers, then tea garden laborers, then coolies also they are being called. So then slowly, what happened? Government missionaries also have taken up that identification, and after independence, they are being called tea garden laborers or tea garden laborers like this. But now that there is a sense of solidarity with the people who are from same origin, so that linkages are being broken, but still have that
sense of belongingness. Say, for example, my forefathers have migrated from somewhere near West Bengal, Bakura side. So I have that belongingness with those lands, although I may not have seen those lands. So, but still, there is always a in my perspective, in for our whatever the present community is. At the same time, they are becoming a part of the Assamese mainstream also. Assamese as they identify as Assamese also, and at the same time the government identification, tea garden laborers or this thing, but the new generation are not happy with this terming. And I have written I that was being controversial around that time. I raised that I wrote in Hindu in an interview by Ashley Tellis. I have rejected, I have denied the term that if we the people here, whoever is there, if we are going to that one particular community cannot be named after a commodity, right? So that when I have raised that, some people are resisting, okay, no, we are happy with this term. So then I have seen last 30-40 years there is an identity struggle, there is an identity movement, and there is still some problematic issues are there, but still the tea garden laborers or Adivasis, they are basically a part of a larger Adivasi society that I personally feel, and like us, lot of people are there because that solidarity is required. We cannot be rootless like some people. We have the truths, so we have to connect with that. We have to have a relation with that. We have to strong those ties. They're just like I have the ties with Mahadev sir, or there are a lot of people from Jharkhand. I have very good ties, and even I visited. So that is there because whenever I see that, yes, we want to be identified as Adivasi, and there are certain political issues are also there, because till now we are not being considered, or we are not being recognized as ST, scheduled tribe or scheduled caste, whatever. We are still OBC. So there is a lot of movement going on since last 20-30 years for two things. Two issues are major in for the people of tea garden laborers or Adivasis. One is the wage, and second one is the identity or demand for the ST, scheduled tribe or scheduled caste also in some cases. So in that scenario, I personally feel that it is always better that for a community, for a person to have ties with the ancestors, have ties with the original land. And then when we talk about this as a writer also, we say I'm personally as a writer. So I'm growing my audience also. I'm growing my larger readers, larger reader spectrum. So that's my idea. But people have reservations about it. Lot of reservations also are there. But still, nowadays, what we have been negotiated, and we have been. I personally use the term that Adivasi tea garden plantation labor or tea garden laborers. So it's because slowly that belongingness, that because after 200 years, if you want to make ties with your original land, it's always a difficult thing. But you should have that as a writer also. I feel that as a human being also, I feel that. So in that scenario, I get two different criticism. One is from my own community. If I identify as an Adivasi, then they ask me why you don't want to become part of the tea garden laborers. You because there are two migrations actually that I should tell you, that some people have come here to work in the tea gardens, and some have migrated by their own also, because the lower Assam side, specifically Kokrajhar. So there is a clear division among them also. It's very complex, I can tell you. So when I identify myself as an Adivasi, so a larger identity is also being also being put to us as an Assamese also. But apart from saying this thing as a with a community sense or with an indigeneity sense, I would like to identify myself as a Adivasi tea garden laborers, and slowly we can make good terms and make
and we have to work on all getting all those ties, creating all those ties. And this is personally why I feel we have roots somewhere, so we should not forget that. So that is my very simplistic understanding. So in that scenario, as a writer or as a part of the society, I feel that for identity's sake is a different thing, and we have to work for to raise this identity. We have to work on it. Mahadev sir was telling that we have to do different sorts of things. We have to establish ourselves either by writing, either by playing, or either we have to do a lot of hard work. We have to do a lot of challenges are there as a community. So in that scenario, what I personally feel that the whole community has to be politically strong. So we have to, if we don't have the political power wherever we are, so we have nothing actually. So we don't get the economic power also, we don't get the social status also. So first thing I believe as a writer, we should get the political, we should be a part of the political power structure, and we should become strong politically and socially. So that is more important for us right now. And we are raising these issues. So there are a lot of incidents are happening. We are raising all these things. So I personally feel that in the coming years, we will have a lot more challenges like this. And also as a writer, as a part of the civil society, we have a lot of things to do apart from writing. Not only writing is a part of the job. So apart from writing, we have a lot of challenges to do. We have to work on the education side, we have to work on the health related issues, we have to become politically strong. Then only we did these identity struggles or these struggles will be worth actually. So that's all actually for the time being. Thank you, sir. So we'll take a few questions from our audiences. So there's a question that anyone of you can answer. How can the publishing industry engage with Adivasi literature can get better? Question is from Neerath. Essentially, how can the publishing industry bring more Adivasi writing and authors to the mainstream? What can they do? And yeah. Nitisha ma'am, if you could answer that. मैं सवाल नहीं सुन पाई, काइंडली एक बार रिपीट कर देंगे नंदिनी? यस मैम, जो आदिवासी लिटरेचर है उसमें जैसे पब्लिशिंग इंडस्ट्री जो है और जो आदिवासी राइटर्स लिखते हैं कैसे वो बेटर लगता है आदिवासी लिटरेचर को इन सेंस ऑफ द पब्लिशिंग इंडस्ट्री, कैसे और आदिवासी लिटरेचर कैन कम अप आ सकते हैं इन द लाइक महादेव सर ने एक बात कही यहाँ पे कि जब वो अपनी भाषाओं में लिख रहे होते हैं तो उनको छपने का बहुत प्रॉब्लम होता है, जो उन्होंने अपनी प्राइमरली लैंग्वेज को स्टार्ट वहां से किया था लेकिन छोड़ा। तो ये बात अभी भी बहुत सारे आदिवासी भाषाओं और उनके साहित्य के साथ बिल्कुल जायज दिखाई पड़ती है कि वो उनकी भाषाओं में होने की वजह से, स्क्रिप्ट की बाद में बात कर लेंगे, पहले उनकी भाषाओं पर ही बात कर लें, तो उनकी भाषाओं में रीडर नहीं मिलने का और फिर उस लिटरेचर को मार्केट नहीं मिलने का, ये सब चीजों को कह के वो उसको साइलेंट कर रहे होते हैं। अभी जब यूनिवर्सिटीज में कुछ हिस्सों में रिसर्च स्टार्ट हुआ है
तो रिसर्चर्स के लिए कुछ किताबें छपनी शुरू हुई हैं, और वो किताबों का स्टैंडर्ड अगर आप देखें तो कई बार बहुत अच्छा नहीं होने के बावजूद, क्योंकि डिमांड में होने की वजह से, वो कई बार कई कंटेंट्स जो प्रॉब्लमेटिक होते हैं उसको भी छापने से कोई गुरेज नहीं करते, क्योंकि उनको उसको सिर्फ वैल्यू दिख रहा होता है। बहुत कम संस्थाएं दिखाई पड़ती हैं जो खुद ही आदिवासी समूहों के द्वारा या आदिवासी इंडिविजुअल्स के द्वारा चलाई जा रही हैं, और वो एक प्रकाशन की दिशा में कुछ काम कर रहे हैं। आदिवासी उसमें से एक बड़ा नाम है। साथ ही प्यारा क्रिकेटर फाउंडेशन को आप देख लें, और इसके साथ में रमनिका गुप्ता जी जब तक थी तो उन्होंने एक अच्छा लिटरेचर डेवलप किया, और अनुवादों के माध्यम से उन्होंने हिंदी और इंग्लिश में बहुत सारी भाषाओं, आदिवासी भाषाओं को स्पेस दिया था। तो आप पाएंगे कि मतलब एक पब्लिशर के पास उतना ही बस इंटरेस्ट है कि उससे मुझे सोर्स ऑफ इनकम आ जाए, मुझे कॉपीराइट वाला मसला ना पड़े, क्योंकि आदिवासी राइटर्स अपनी किताब छप जाने के नाम पे बहुत सारी चीजों को खुश रहते हैं, खुशफहमी में रहते हैं। और मतलब खुशफहमी की बात गलत होगी, मैं इसको ऐसे कहना चाहूंगी कि जिनके पास रिसोर्सेस नहीं होने की वजह से उनके पास एक दबाव बनता है कि जहां से भी छप रहा है छप जाए, बस कॉपीराइट और इसका सर्कुलेशन, वो कितनी प्रतियां आपको देंगे, कितनी कॉपीज देंगे नहीं देंगे, ये तमाम चीजों को इग्नोर करते हुए बहुत कम लिटरेचर है जो सरकारी संस्थाएं साथ छाप रही हैं। एनबीटी के पास बहुत कम लिटरेचर है, साहित्य अकादमी बहुत कम, उसके पास जो अपने 22 लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में, उनको ही छापने का एक आयोजन है। वो बाकी अन्य भाषाएं, सिर्फ यहाँ पे 22 भाषाएं देश में नहीं एग्जिस्ट करती हैं। आदिवासी भाषाओं का कितना संख्या है, और उनको एक कोई सरकारी संरक्षण नहीं मिल पाने की वजह से वो दूर होती चली जा रही होती है। तो मतलब मुझे लगता है पब्लिशिंग हाउस के एरिया में मेजर काम करने की जरूरत है, और जितने भी छोटे छोटे संगठन के द्वारा और लोकल रीजनल प्रेसेस के द्वारा जो किताबें निकल रही होती हैं, उसका मार्केट और सर्कुलेशन, और ऐसी बॉडीज, क्योंकि अब आदिवासी बहुत हद तक एम्प्लॉयमेंट में नहीं आकर के, सरकारी नौकरियों में नहीं आकर के वो बिजनेस की तरफ मूव ऑन किए हैं। तो इस बिजनेस में भी उनका एक ये एरिया हो सकता है जिसपे कि वो काम करे। और जो आदिवासी लिटरेचर का मतलब गिरता हुआ कई सारा कंटेंट छाप देते हैं कोई भी, जिसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, बस उनको लगता है कि हाँ ये रिसर्चर्स के हाथों बिक जाएगा, ये एकेडमिया में क्योंकि बात चल रही है इसलिए बिक जाएगा। तो इस कंटेंट को हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान दे करके देखने की जरूरत है। मुझे डीयू के एक प्रसंग की याद आ रही है, जब रिसेंटली वो टाइम पीरियड मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन महाश्वेता देवी की एक रचना जो इंग्लिश ऑनर्स में 5th सेमेस्टर में लगी हुई थी, द्रौपदी नाम से, उस राइटिंग को हटाया गया था। और उस द्रौपदी कहानी को अगर आप देखें तो एक गैर आदिवासी चिंतक के पास भी जो संवेदनाएं आदिवासी स्ट्रगल को लेकर के है, उनके वुमेन को लेकर के है, वो मतलब बहुत खूबसूरत एक रेजिस्टेंस के साथ में महाश्वेता देवी ने उस द्रौपदी कहानी को रखा था। और ऐसे अच्छे कंटेंट को जो सत्ताएं हैं, जो गवर्नमेंट्स है, जो एकेडमिया है, वो कैसे बाहर का रास्ता दिखा देती हैं। तो इन सब चीजों पे एकदम बहुत ध्यान रख करके हम लोगों को एक राइटर्स ग्रुप को, पब्लिशर्स ग्रुप को, एक एकेडमिशियंस ग्रुप को एक प्रेशर ग्रुप बना करके इस पर काम करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से महादेव सर हमेशा बोलते रहते हैं कि झारखंड में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इस ओर भी मांग करनी चाहिए कि जो सो कॉल्ड आदिवासी यूनिवर्सिटीज बने हैं, जो पूरे तरीके से सिर्फ उन्हीं के स्ट्रक्चर के लोगों को बैठाने के लिए बने हैं, उन सबसे गुरेज करते हुए कुछ राज्य सरकारें सामने आए, कुछ केंद्र सरकार भी सामने आए, और आदिवासी यूनिवर्सिटी और उस एकेडमी को आदिवासी साहित्य एकेडमी की स्थापना करें, ताकि हम लोग एक्चुअली जो हम बचाना चाहते हैं हम बचा सके। थैंक यू। So I have something to tell. Yeah, I also have want to say a few words regarding this. I think to explore the Adivasi world, we should publish more on our the books from Adivasi literature.
But in that scenario, I believe that we have to take that initiative and we have to come up with more local publishers and more independent publishers. Independent means I'm saying it because I have seen the in other languages also, until and unless somebody has to take that pain and publish it, and maybe it may not be a professional profitable venture, but still with that with that basically with that faith and all, if somebody continuously publishing Adivasi literature, it will be a kind of great effort. That idea, that thing I have seen, say for our Boru literature. This is Boru is a larger community in Assam. They are more in Assam as well as little bit West Bengal and Bangladesh. So they are more in that Boru literature. What they have done, they are not relying on the traditional publishers in Guwahati. They are not relying on the depending on the bigger publishers in Guwahati. They started publishing it from Kokrajhar, they started publishing from Boroma, they started publishing from Dhikiaduli, for all small pocket hits. And they publish very less, say only 500 copy or 300 copies. But still, the purpose is done. If you take that initiative, if I love my own literature, then definitely, and all those are now getting slightly bigger also, because Boru has been in that 22 languages, no? So their books are being selling also. But I have suggested in Assam that if you want to say some has to take that pain and establish a press or establish a publishing house, and if we can start publishing the other than Assamese, Hindi and English, whatever is languages coming up, sometime if we can publish something in Puruk, something in Mundare, something in Santali, so that also can be done. And also at the same time in Assam, we have lot of Sahitya Sabhas actually, that is basically literary organization. There's a Assam Sahitya Sabha, it's a bigger organization. But we have seen there are Santali Sahitya Sabha, then Mundari Sahitya Sabha, all these are there. So we have put, when they have meetings and all, they have conferences and all. So they are being suggested that they publish their own literature by their own body, independent. And there is a Saha Janagosti Sahitya Sabha also is there. So they are also publishing books in their own capacity. Luckily, they get a fund yearly. They get a fund from government of Assam. So I personally believe that rather than going into bigger publishers or for translation, it is different thing. I'm talking about original literature. So in that scenario, I believe that local publisher and independent publishers are more required right now. And since publishing industry has evolving a lot, you don't have to rely on the traditional publisher. There is a scope of self-publication also. So I believe that there's a lot of scope in the publishing scenario right now. Although people complain that books are not selling, but that's a myth actually. People are buying also, people are reading also. So I believe that more and more independent local publishers are required to reach that language or that literature to certain level. From there, definitely I can see that bigger publishers will also play the role. I have seen that when there is a lot of Boru publication have been done, so they are being translated, and those things are taking up by bigger publishers. Apart from Sahitya Academy and basically I'm talking about profit making publication houses. So I believe we have to start with from scratch, and we have to take that pain, and definitely when we reach that literature to certain level, then definitely other publishers will also look into it, and they will definitely work on it. And we have my idea is we have to compel them to publish Adivasi literature also. So that we can do by doing by our own small efforts, collective efforts. I think that is one point of discussion then we can make in later times also. Yeah.
नंदिनी जी कुछ मैं बोलूं? जी सर, हाँ जी सर। हेलो। हेलो, हाँ हाँ, महादेव सर। मैं जी बोलूं कुछ? जी सर। अच्छा, जैसे कि अब पब्लिशिंग की बात है, तो पब्लिशिंग की समस्या है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि हमारे बहुत सारे जो ट्राइबल लैंग्वेज हैं वो हमारे जो सेंट्रल इंडिया के कंपैरिजन में वो बेहतर पोजीशन में है। जैसे कि खासी, खासी शिलोंग, मतलब वहाँ मेघालय में बोली जाती है, लेकिन खासी के 5 अखबार या 4 अखबार हैं शिलोंग से निकलते हैं। उसी तरह कार्बी के अखबार जो हैं वो दीपू से निकलते हैं। अब कोकराझार से आपके बोडो भाषा में अखबार निकलते हैं। वो इसलिए है कि वो 6 शेड्यूल एरिया और यहाँ 5th शेड्यूल का अंतर पड़ता है। तो 6 शेड्यूल में जो हमारे जो ट्राइबल ऑटोनॉमी है वो ज्यादा है, वहाँ फंड हमें ज्यादा मिलते हैं, जिसे कि जो हमारे जो 6 शेड्यूल के एरिया में रहने वाले जो हमारे ट्राइबल हैं वो अपने लैंग्वेज कल्चर के डेवलपमेंट के लिए उस फंड का ज्यादा यूज कर पाते हैं। उसके कंपैरिजन में हमारे 5th एरिया में जो सेंट्रल इंडिया में जो इलाके में है ऐसे कुछ प्रोविजन नहीं है। इसके लिए हमारे स्ट्रगल चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का। एक ये हुआ। उसके बाद में जैसे है कि ये जैसे एनबीटी हुआ या साहित्य अकादमी है, इन लोगों ने कई किताबें ट्रांसलेशन में छापे हैं। खास करके साहित्य अकादमी ने देखिएगा कि नॉर्थ ईस्ट की जितनी किताबें छापे हैं वो हमारे सेंट्रल इंडिया की उतनी किताबों या उतने राइटर को नहीं छापा है। यही चीज एनबीटी के साथ है। तो उसमें लगता है कि हमारा जो लेखक समुदाय सेंट्रल इंडिया का है शायद उतना अवेयर नहीं है, या एनबीटी या साहित्य अकादमी को उतना वो प्रेशर नहीं दे पाता होगा, इसलिए ऐसा होगा। तो हमारे जो लेखक हैं, हमारे सेंट्रल इंडिया के जो ट्राइबल राइटर हैं, उनको भी अवेयर होना होगा, जागरूक होना होगा, या काम करना पड़ेगा। और तीसरा है पब्लिशिंग के अलावा अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात होगी, लैंग्वेज अवेयरनेस की, तो आज की तारीख में जो ये सोशल मीडिया है, वो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और जैसे मैं अभी अपनी मातृभाषा या दूसरी भाषाओं के बहुत सारे यूट्यूबर को और बहुत सारे जो छोटे छोटे चैनल है उसको मैं देख रहा हूँ, कुड़ुक में, संताली में, है ना, और अनेक दूसरी दूसरी भाषाओं में छोटे छोटे न्यूज चैनल सब बने हैं। लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड है, स्तर जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। उसके प्रेजेंटेशन में कमी है, और उसका जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें भी कमी है। तो यदि हमारे जो जो विद्वत समाज है, पढ़े लिखे लोग जो हैं, वो इस तरह के सोशल मीडिया से जुड़ के ये जो एक अपॉर्चुनिटी है अपने लैंग्वेज को डेवलप करने का, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का, उसका भी उपयोग किया जा सकता है। साइमल्टेनियसली हमें क्या हुआ कि जो प्रिंट मीडिया है उसमें भी काम करना है, और ये साथ ही साथ जो सोशल मीडिया है इसमें भी याद करना है। क्योंकि यंग जनरेशन क्या है, वो आज हर किसी के पास जो मोबाइल है वो मोबाइल में ही देखना सुनना पसंद करता है। तो हमें कहानी या कविता या जो कुछ है उसको या कहानी है या और दूसरे चीज है उसको ऑडियो बुक के रूप में भी अगर हम लोग वो वैसा दें तो हो सकता है कि हमें ज्यादा ऑडियंस मिल सकते हैं। दिस इज माय सजेशन। हम लोगों को ऐसा सोचना चाहिए आगे। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर महादेव सर। तो आप तीनों स्पीकर्स को बहुत बहुत थैंक यू इतना अच्छे डिस्कशन के लिए। आई होप कि हम यहाँ से जो भी आदिवासी लिटरेचर पे, लैंग्वेज पे और कैसे हम अपने कम्युनिटी को आगे बढ़ाए, उसके लिए जो हमने सीखा, आई होप यहाँ से हम और आगे लेके जाए। होपफुली नेक्स्ट फिर से जब हम मिले तो हमारा डिस्कशन में कुछ चीजें ना हो और कुछ चीजें और इंक्लूड हो उसके लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों को और हमारे ऑडियंस को भी, सबको जोहार।